चैप्टर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। और इसकी चर्चा हुई है 12 to 30 सेक्शन के बीच में, भाग 12 से लेकर 30 के बीच में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, स्कूल और शिक्षकों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट अस स्टार्ट। एक्सटेंट ऑफ स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के संदर्भ में स्कूल की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट अ डैश स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब टू ऑल चिल्ड्रन एडमिटेड देयर। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो सभी बच्चों को फ्री दिया जाएगा, 8 तक के, 6 to 14 years। एडेड स्कूल shall provide free and compulsory elementary education to such proportion of children admitted therein as its annual recurring aid or grants so received bears to its annual recurring expenses subject to a minimum of 25%। तो सब 25% जो है वो वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए भी प्रोवाइड करना होगा, इवन इफ़ इट इज़ अ एडेड स्कूल। स्पेशल कैटेगरी स्कूल एंड अनएडेड स्कूल, दो बातें हैं। स्पेशल कैटेगरी स्कूल जिसमें अपना केंद्रीय विद्यालय भी है, और अनएडेड स्कूल शैल एडमिट इन क्लास 1 टू द एक्सटेंट ऑफ एट 25% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट क्लास। अगर 100 बच्चों की स्ट्रेंथ है, ऐसा होता नहीं है, तो आसानी के लिए बताऊं तो उसका 25%, मतलब 25 बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शंस एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion, provided further that they where a school, government aided, special category or unaided, imparts preschool education, the above provisions shall apply for admission to such preschool education. Unaided schools providing free and compulsory elementary education shall be reimbursed expenditure so incurred by it to the extent of per child expenditure incurred by the state or the actual amount charged from the child, whichever is less, provided that such reimbursements shall not exceed per child expenditure incurred by a school, provided that such reimbursement shall not exceed per child expenditure incurred by a school। तो ये पॉइंट 13 में देख रहे हैं, नो कैपिटेशन फ़ी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। ये बहुत ही खतरनाक इसमें पनिशमेंट है। नो कैपिटेशन फ़ी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। तो नो स्कूल और पर्सन शैल while admitting a child collect of any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardians to any screening procedure। किसी भी तरह के स्क्रीनिंग का प्रोसीजर नहीं अपनाया जाएगा विद्यालयों में, और किसी भी तरह का एक्स्ट्रा जो मनी एडमिशन के लिए मांगा जाता है वो नहीं मांगा जाएगा कैपिटेशन फ़ी के नाम पर। एनी स्कूल और पर्सन इफ़ इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 रिसीव्स कैपिटेशन फ़ी, अगर कोई लेता है कैपिटेशन फ़ी एक्स्ट्रा मनी, शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच मे एक्सटेंड 10 times द कैपिटेशन फ़ी चार्ज। अगर
₹1 का एप्लीकेशन फ़ी लिया गया है तो ₹10 फ़ाइन होगा। अगर ₹100 लिया गया है तो ₹1000 फ़ाइन। अगर 1 लाख 10,000 लिया गया है तो ₹1,00,000 फ़ाइन। ऐसे सबने 10 टाइम्स। Subjects a child to screening procedure shall be punishable with a fine which may extend to ₹25,000 for the first contravention। अगर स्क्रीनिंग के लिए पैसा लिया गया है तो 25,000 पहली बार होगा, दूसरी बार 50,000, प्रत्येक बार ऐसा लिया गया है तो हर बार 50,000 उसके ऊपर फाइन होगा। पहला बार है तो 25,000 लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अगर लिया किया है उसने यही काम तो 50,000 के रेट से लिया जाएगा। प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन। For the purpose of admission to elementary education, the age of a child shall be determined on the basis of a birth certificate or on the basis of such other documents as may be prescribed. एज प्रूफ क्या होगा? आंगनवाड़ी रिकॉर्ड, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ एएनएम रजिस्टर रिकॉर्ड, डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ अ चाइल्ड बाय पेरेंट्स और गार्जियंस, और नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड admission in school for lack of age proof. No denial of admission. A child shall be admitted in a school at the commencement of the academic year or within such extended period as may be prescribed, provided that no child shall be denied admission if such admission is sought subsequent to the extended period. प्रोविजन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्सन। तो पहले ये प्रोविजन था जो कि कटा हुआ है इसमें। नो चाइल्ड एडमिटेड इन अ स्कूल शैल बी हेल्ड बैक इन एनी क्लास और एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बच्चों को किसी भी क्लास में रोका नहीं सकता, ये पहले प्रोविजन था, लेकिन इस प्रोविजन में बदलाव आया इसलिए कट कर दिया गया। देयर शैल बी अ रेगुलर एग्जामिनेशन in the 5th class and in 8th class at the end of every academic year. If the child fails in above examination, he shall be given additional instruction and granted opportunity for re-examination within a period of 2 months from the date of declaration of result। 2 महीने का उसको समय दिया जाएगा। री एग्जामिनेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर, मतलब 2 महीने तक आपको बढ़िया से उसको खिला पिला के मोटा करना है, मतलब बढ़िया से तैयार करना है, दिमागी रूप से उसको स्ट्रांग बनाना है। ओके। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अलाउ schools to hold back a child in the 5th class and in 8th class on in both classes if he fails in the re-examination। अब ये सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया कि उनको 5वीं और 8वीं क्लास में रोका जाएगा कि नहीं रोका जाएगा अगर वो दोबारा फेल हो जाता है तो। प्रोवाइडेड दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे डिसाइड not to hold back a child in any class till the completion of elementary examination. No child shall be expelled from a school till the completion of elementary education। यह अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये सब प्रोविज़न किए गए। Amendment Act 2019 prohibition of physical punishment and mental harassment to child। No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment। पहला point। Whosoever contravenes the provisions shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person। Next, no school to be established without obtaining certificate of recognition। No school other than government school shall, after the commencement of this act, be established or function without obtaining a certificate of recognition from prescribed authority।
No such recognition shall be granted to a school unless it fulfills norms and standards specified. On the contravention of the condition of recognition, the prescribed authority shall, by an order in writing, withdraw recognition. Any person who establishes or runs a school without obtaining certificate of recognition or continues to run a school after withdrawal of recognition shall be liable to fine which may extend to rupees 1 lakh, and in case of continuing contravention to a fine of rupees 10,000 for each day during which such contravention continues. कुल मिला के एक बड़ा प्रयास किया गया कि बिना रिकॉग्निशन के स्कूल नहीं चले, कि बहुत सारे स्कूल जो है बिना रिकॉग्निशन के चलते रहते हैं. नेक्स्ट है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल. Where a school established before the commencement of this act does not fulfill the norms and standards, it shall take steps to fulfill such norms and standards as at its own expenses within a period of 3 years from the date of such commencement. Where a school fails to fulfill the norms and standards within the specified period, the authority shall withdraw recognition granted to such school with effect from the date of withdrawal of recognition. No school shall continue to function. Any person who establishes or runs a school without obtaining certificate of recognition or continues to run a school after withdrawal of recognition shall be liable to fine which may extend to rupees 1 lakh, and in case of continuing contravention to a fine of rupees 10,000 for each day during which such contraventions continues. Power to amend schedule. The central government may amend the schedule by adding to or omitting therefrom any norms and standards. सरकार इसमें परिवर्तन ला सकती है. स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC. अब स्कूल अदर देन अनएडेड स्कूल, मतलब जितने एडेड स्कूल हैं, shall constitute a school management committee consisting of the elected representatives of the local authority. पहला पॉइंट. Parents or guardians of children admitted in such school and teachers, provided that at least three-fourths of the members of such committee shall be a parents or guardians. तो मान लीजिए इसमें 3/4 ऑफ द मेंबर्स, अगर 40 मेंबर हैं तो उसका 3/4 मतलब 30 मेंबर जो हैं कौन होंगे? पेरेंट्स और गार्जियंस होंगे. 3/4. Provided further that proportionate representation shall be given to the parents or guardians of children belonging to disadvantaged group and weaker section. ऐसे weaker section को disadvantaged group को दिया जाएगा. Provided also that 50% of the members of the such committee shall be women, उसमें महिलाएं होंगी. The school management committee shall perform the following functions, namely monitor the working of the school, prepare and recommend school development plan. बहुत ही important काम. Monitor the utilization of the grants received from the appropriate government or local authority or any other source and perform such other functions as may be prescribed. Provided that the school management committee constituted in respect of a school established and administered by minority, whether based on the religion or language, and all aided schools shall perform advisory function only. यह अमेंडमेंट आया है 2012 में. Provided that the school management committee SMC constituted in respect of a school established and administered by the minority,
minority, whether based on religion or language, and all aided schools shall perform advisory function only. School development plan. Every SMC except the SMC in respect of a school established and administered by minority, whether based on religion or language, and all aided schools amendment 2012 में shall prepare a school development plan SDP. इनके लिए SDP की बात की गई है. जितने भी माइनॉरिटीज टाइप के संस्थान है, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे लिंगुअल माइनॉरिटी हो, shall prepare a school development plan SDP. School development plan is prepared for 3 years consisting three annual sub plans. The school development plan shall be the basis for the plans and grants to be made by the appropriate government or local authority. Qualification for appointment and terms and conditions of a services of a teachers. ये इसकी बात की गई है. Any person possessing such minimum qualification as laid down by an academic authority authorized by the central government shall be eligible for appointment as a teacher. एकेडमिक जो अथॉरिटी है उसकी ये NCTE है, टेक्निकल एजुकेशन की. Where a state does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education or teachers possessing minimum qualification are not available, the central government may relax the minimum qualification required for appointment as a teacher. अच्छा, ये भी प्रोविजन है. अच्छा, फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years. 5 साल के अंदर आपको वो सारे जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा. Where a state does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education or teachers possessing minimum qualification are not available, the central government may relax the minimum qualification required for appointment as a teacher for such period not exceeding 5 years. Provided that a teacher who at the commencement of this act does not possess minimum qualification shall acquire such minimum qualification within a period of 5 years. Provided further that every teacher appointed or in position as on 31st March 2015 who does not possesses minimum qualifications as laid down under subsection 1 shall acquire such minimum qualification within a period of 4 years from the date of commencement of the RTE Amendment Act 2017. Every teacher appointed or in position as on 31st March 2015. ठीक है, उनको 4 साल shall acquire such minimum qualification within a period of 4 years from the date of commencement of the Act RTE 2017 से लेके 4 साल के अंतर्गत. Duties of a teacher and the redressal of grievances. A teacher appointed shall perform the following duties, namely, maintain regularity and punctuality in attending school, complete entire curriculum within the specified time, assess the learning ability of each child, and accordingly supplement additional instructions, if any, as required, hold regular meeting with parents and guardians and apprise them about the regularity in attendance, ability to learn, progress made in learning, and any other
relevant information about the child and perform such other duties as may be prescribed. A teacher committing default in performance of duties shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to him or her. Pupil teacher ratio, say schedule given at end. Within 3 years, Amendment 2012. From the date of commencement of this Act, the appropriate government and the local authority shall ensure that the pupil teacher ratio as specified in the schedule for the purpose of maintaining the pupil teacher ratio. No teacher posted in a school shall be made to serve in any other school or office or deployed for any non-educational purpose other than those specified in section 27. Filling up vacancies of teachers. The appointing authority in relation to a government and aided shall ensure that vacancy of a teacher in a school under its control shall not exceed 10% of the total sanctioned strength. Provision of a deployment of मतलब पहले इससे पहले वाला पॉइंट एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं. फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ टीचर्स शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ. तो किसी भी हालत में अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इस बात का ध्यान रखना है, वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो टीचर की जो वैकेंसी है किसी भी हालत में जो है 10% से ज़्यादा नहीं, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वैकेंसी कभी भी खाली ना हो. मतलब हर हालत में इसको appropriate number of teachers should be there in the school. Prohibition of deployment of teachers for non-educational purposes. No teacher shall be deployed for any non-educational purposes other than the decennial population census, disaster relief duties, or duties relating to elections to the local authority or the state legislature or the parliament. Prohibition of private tuition by teacher. No teacher shall engage himself or herself in private tuition or private teaching activity. तो ये हमारा था चैप्टर 5 जिसके बारे में चर्चा किया. अगला जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्शन 29-30 में जिसकी चर्चा की गई है. थैंक यू.